So good morning to all of you and welcome back again in our online lectures for the semester 6, paper 1 having the name Plant Physiology and the Biotechnology. So dear students, in the previous lecture we have started the semester 6, and in this semester 6, you know that as per a protocol, there are two papers of botany, paper 1 and the paper 2. The paper 1 consists of total 4 units. Out of these 4 units, unit number 3 and unit number 4 is allotted to me. And in previous lecture, we have already started the unit number 3, which having the part of plant tissue culture, definition, totipotency, explant, aseptic culture, in vitro micropropagation, methods of sterilization, autoclaving, dry heat, chemical sterilization, then culture media, having the example MS media, hormone requirement, and applications of the tissue culture. Next part, that is the callus and organ culture, shoot tip or anther culture and its application, hybrid production and its application. All these contents are involved in this unit number 3. Then unit number 4, it is a part of genetic engineering, which is the part of advanced day biotechnology. In this genetic engineering, we will study the tools, enzymes, restriction enzymes, ligases, DNA polymerases, plasmids as a cloning vector, later on DNA library, that is cDNA library, and gDNA library, that is a genomic library. Agrobacterium tumefaciens mediated gene transfer, then structure of TI plasmid, advantages and disadvantages of transgenic plants, for example, that is a BT cotton and a golden rice. So these two units are allotted to me, unit number 3 and unit number 4. So dear students, we have started in the previous lecture, that is the part of unit number 3, which consists of the biotechnology part, and mainly it is related with the plant tissue culture. So in the previous lecture, we have already taken the introduction of the biotechnology and the definition of biotechnology. If you go through the definition of biotechnology, that biotechnology, it is a branch of biology in which the use of live organisms, enzymes, and various processes to produce a product, and this product will provide services for human welfare. It is called as बायोटेक्नोलॉजी, उसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की कि जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, कुछ प्रोसेसेस का यूज किया जाता है और कुछ केमिकल कंपाउंड्स का, एंजाइम्स का यूज किया जाता है. इन सब का यूज करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है कि जो प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग के अच्छे काम के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. सो इट इज अ केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इस ब्रांच को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे. Now let's just talk about this uses of biotechnology. Later on we will go forward for the process of plant tissue culture. हम लोग plant tissue culture के बारे में देखेंगे. Start तो कर चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा revise कर लेंगे. Later on we will move forward for the next topic. Now the uses of biotechnology. That biotechnology, it is useful for the various application. For example, the generation of new and novel pharmaceutical biomolecules. मतलब फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिनली इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके. प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल और मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स सच एज द प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, बायोसॉल्वेंट्स, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा, एम्प्लॉइंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म. Development of new sources of renewable energy, then production of antibiotics, vaccine, etc. Vaccines can be produced by using the biotechnology. Improvement of various disease resistance, stress resistance, insect resistance, and the production of high yielding crop varieties. Applications of animal husbandry and animal health, diagnosis and curing of various diseases of the human beings and other domestic animals. यूज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, इन सभी जगह पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है. यूज ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, फॉरेंसिक साइंस के बारे में, न्याय सहायक विभाग जिसे हम लोग कहते हैं. सो द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ द फॉरेंसिक साइंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ crimes and solving the paternity disputes. Then the tissue culture main technique, that is the tissue culture technique. In this tissue culture technique, we have also discussed the definition. Plant tissue culture, in short, it is called as a PTC. उसे PTC कहा जाता है. It is a very famous and advanced technology of biotechnology.
बायोटेक का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर अगर हम लोग देखते हैं तो प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियली, the process of culturing or growing the isolated protoplast, cell, tissue, or organ on a nutrient medium if it is placed in aseptic condition, which helps to produce into the complete plant. ठीक है, मतलब आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट से, सेल से, टिश्यू से, सिंगल सेल से या फिर टिश्यू से आप लोग कंप्लीट प्लांट बना सकते हो। ठीक है, एक aseptic condition में, that procedure or that process is called as a plant tissue culture. To explain the process of plant tissue culture, scientist Haberland नाम के जो scientist थे, they introduced one important term to explain the process of plant tissue culture, and that important term is called as a totipotency. ठीक है, उस important term को हम लोग totipotency कहते हैं। The concept of totipotency, that is the ability of the plant cell to perform all the functions of development, was also postulated by the Haberland. Basically, totipotency का मतलब होता है the ability of cell to divide and differentiate if it is placed in a proper aseptic condition. ठीक है, अगर हम लोग किसी सेल को प्रॉपर असेप्टिक कंडीशन में, मतलब असेप्टिक मतलब जहाँ पे कंटेमिनेशन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, ऐसे जगह पे अगर हम लोग किसी सेल को रखते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं, तो वो सेल उसमें कितनी कैपेसिटी है ग्रो होने की, ठीक है, सेल में कितनी कैपेसिटी है ग्रो होने की और डिफरेंशिएट होने की, दैट कैपेसिटी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द टोटिपोटेंसी। उसे हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। This totipotency term, it is very important as this plant tissue culture point of view, which was given by the scientist Haberland. Now let's just talk about these basic aspects of the plant tissue culturing. Means why we go for the plant tissue culture, हम लोग plant tissue culture क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? अगर जैसे कि अगर हम मानते हैं कि अगर कोई प्लांट है कि जिसकी स्पीसीज या फिर प्लांट स्पीसीज या फिर कोई वेराइटी बहुत अभी रेयर होते जा रही है, ठीक है, वो रिमूव होते जा रही है, ऐसे प्लांट स्पीसीज को अगर हमें बचा के रखना है, या फिर अगर वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है और सिर्फ हमारे पास उसके कुछ पार्ट्स ही अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल लीफ पार्ट है, टिश्यू है, या फिर सिंगल सेल अगर अवेलेबल है उस प्लांट का हमारे पास, तो सिंगल सेल से हम लोग वो कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं by using this plant tissue culture technique. To understand the techniques of tissue culturing, one should embark upon the certain aspects of the tissue culturing which are essential to ensure the successful result. Means if you want to study the plant tissue culture, then you should know some important aspects or some important terms which are involved in the process of plant tissue culture. These aspects are briefly mentioned below. ठीक है, यानी कुछ important terms है या फिर कुछ important concept है कि जो concept हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर हमें plant tissue culture डिटेल में पढ़ना है तो। So the first content or the first aspect of plant tissue culture or PTC, it is explant. Now what is this explant? Any excised plant part which is used in the tissue culture is called as an explant. मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर में जो कोई पार्ट यूज होने वाला है प्लांट का, इट मे बी अ सेल, इट मे बी अ टिश्यू, और इट मे बी एनी ऑर्गन, इट मे बी दैट इज लीफ, स्टेम, रूट्स एटसेट्रा, सीड्स इवन आल्सो। अगर प्लांट टिश्यू कल्चर में जो भी प्लांट का पार्ट यूज होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ पीटीसी विच इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट, उसे हम लोग एक्सप्लांट कहेंगे। एक्सप्लांट में भी इट मे बी अ रूट, स्टेम और लीव्स। Basically, it is a source of material used to initiate the cultures. Cultures बनाने के लिए, मतलब उसको ग्रो करवाने के लिए जो बेसिक मटेरियल लगता है, that is the explant. The explants used may be leaf, stem pieces, axillary buds, roots and shoot tips, anther, ovary, endosperm, etc. एक्सप्लांट जो हो सकता है वो एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है, इट मे बी अ लीफ, वो लीफ भी हो सकता है, स्टेम का टुकड़ा हो सकता है, एक्सिलरी बर्ड्स हो सकते हैं, इट मे बी अ रूट एंड शूट टिप्स, ठीक है, रूट की टिप्स या फिर शूट मतलब जो अबोव पार्ट होता है, अबोव द सॉइल पार्ट का जो टिप पोर्शन होता है, शूट टिप्स। एंथर्स भी यूज कर सकते हैं हम लोग एज एक्सप्लांट, ओवरी यूज कर सकते हैं, एंडोस्पर्म यूज कर सकते हैं। So all this content can be utilized as an explant.
During selection of explant, it is necessary that the explant should be used young and healthy. ठीक है, मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सप्लांट जो यूज किया जाता है वो यूज करना चाहिए ज्यादातर यंग एंड हेल्दी पार्ट शुड बी यूटिलाइज. ठीक है, मतलब एक्सप्लांट अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो दैट एक्सप्लांट शुड बी यंग, यंग एंड हेल्दी. ठीक है, मतलब न्यू ग्रोइंग पार्ट जो होता है प्लांट का, वो न्यू ग्रोइंग पार्ट जो होता है उसे ज्यादातर यूज किया जाना चाहिए एज एक्सप्लांट. अभी क्यों यंग और अर्ली पार्ट यूज करना चाहिए? बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द एनी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन. ठीक है, यंग पार्ट जो होता है प्लांट का, ठीक है, तो इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए यंग पार्ट यूज किया जाता है. Again, the selection also depends upon the objectives of the study to initiate the cultures. The selected explant should be properly sterilized. जो कोई एक्सप्लांट हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसे प्रॉपरली स्टरलाइज करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज दिस स्टरलाइज? स्टरलाइज मींस रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन. उसमें से कंटेमिनेशन हमें रिमूव करना पड़ेगा. सो इट शुड बी स्टरलाइज बाय यूजिंग द सुटेबल स्टरलाइजेशन मेथड्स. मतलब हम जो एक्सप्लांट यूज करने वाले हैं उस एक्सप्लांट को प्रॉपरली स्टरलाइज करना जरूरी है. विदाउट स्टरलाइजेशन यू कैन नॉट बी मूव इंच अहेड इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक अगर आप लोग कर रहे हो और अगर आप लोगों ने स्टरलाइजेशन नहीं किया है तो स्टरलाइजेशन किए बगैर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते हो. योर एक्सपेरिमेंट में 100% योर एक्सपेरिमेंट विल बी फेल. ठीक है, आप लोगों का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन आ जाएगा विदाउट स्टरलाइजेशन. तो स्टरलाइजेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वी कैन सी दैट इट इज अ बैकबोन ऑफ प्रोसेस ऑफ पीटीसी, दैट्स अ प्लांट टिश्यू कल्चर. Various sterilization methods are available and they would be described in ensuring the segment of the same chapter. स्टरलाइजेशन की अलग अलग मेथड्स है कि जो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हम लोग देखेंगे स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स. दिस प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी वाज माय स्पेशलाइजेशन. हमारा स्पेशलाइजेशन तो हमारा ये रोज का ही काम था, स्टरलाइजेशन करना, उसके बाद में कैलस ग्रो करवाना, सेल्स यूज करना, एक्सप्लांट यूज करना, उसको स्टरलाइज करना. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग. मेरा एक प्रोजेक्ट भी है इस पे, प्लांट टिश्यू कल्चर पे, ऑन वन प्लांट विच हैविंग द नेम एब्रस प्रिकेटोरियस, जिसे गुंज कहा जाता है, व्हाइट गुंज जो होते हैं. तो वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को जैसे हम लोग एंड पे आ जाएंगे इस यूनिट के. So let's just talk about the second term or the second aspect related to the plant tissue culture, that is the callus. Cells from any plant species can be cultured aseptically on or in a nutrient medium. Means it is a second step of the plant tissue culture, that is the growth of callus. Callus जो होता है it is grows after the growth of cells. जो कोई सेल हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए एक्सप्लांट, ठीक है, इट मे बी ए सेल, इट मे बी ए टिश्यू और इट मे बी ए ऑर्गन. तो जो कोई एक्सप्लांट हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस एक्सप्लांट की ग्रोथ होने के बाद जो पार्ट मिलेगा हमें, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ कैलस, व्हिच इज आवर टुडेज पासवर्ड. हमारा आज का पासवर्ड है ये कैलस. Tissues and the cells cultured on a agar gel medium from an unorganized mass of cells called as a callus. So they give the definition here. इन्होंने यहाँ पे definition दी है कि callus का मतलब क्या होता है. Tissues and the cells cultured on a agar gel medium which form an unorganized mass of cell called as a callus. So basically you can say that the unorganized mass of cells, unorganized mass क्यों कहा है इन लोगों ने? क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, कैलस का. इसलिए उसे उन्होंने कहा है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ कैलस. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस कि कैलस हम लोग किसे कहेंगे या फिर कैलस हमें कैसे मिलेगा. एक्सप्लांट की ग्रोथ होने के बाद, मतलब एक्सप्लांट को जब हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखेंगे, ठीक है, और एक्सप्लांट की जैसे ही ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगी तो ग्रोथ होने के बाद जो पार्ट हमें मिलेगा, अनऑर्गेनाइज्ड मास मिलेगा, दैट अनऑर्गेनाइज्ड मास इज कॉल्ड एज कैलस. विदिन 2 to 4 weeks, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट स्पीसीज, द मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स इज प्रोड्यूस. यानी 2 to 4 weeks में हमें ये कैलस मिल जाएगा वहां पे, मतलब जो सेल्स रहेंगी वहां पे वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी और वैसे ही हमें वहां पे कैलस दिखाई देगा.
जुवेनाइल टिश्यूज आर मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस अ कैलस, मतलब जो वेजिटेटिव टिश्यूज होते हैं, सोमैटिक सेल्स जो होती है, टिश्यूज जो होते हैं एकदम यंग और हेल्दी टिश्यूज जो होते हैं, जो जिनमें कैपेसिटी होती है टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, so these juvenile tissues are most likely to produce a callus. Under the influence of plant growth hormones, the cells of explant may be induced to divide and form a loose mass of cells which are highly unorganized, and it is called as callus. Finally, we can say that the definition of callus, that is the unorganized mass of cells or the unorganized mass of tissues uh, which helps to produce the complete plant, is called as a callus. उसे हम लोग callus कहेंगे. तो just a minute, हम लोग देख लेते हैं images वहाँ पे callus की, आपको दिखा देता हूँ. So you can see here the part of callus. So जैसे ही हम लोग यहाँ पे explant रखेंगे, after placing the explant on nutrient medium, we will get the callus. So like this, ठीक है, this is the callus, unorganized growth of that explant, it is called as a callus. इसे callus कहेंगे हम लोग. देखिए इसका कोई शेप साइज नहीं है, बहुत सारे वहाँ पे सेल्स ग्रो हो चुके हैं. So this is the callus, ठीक है, ये image है callus की. This is the image of callus, right? Now what is this callus? Basically that callus कब मिलता है हमें, जब भी हम लोग एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखते हैं. तो यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का जो आप लोगों को जेली सब्सटेंस जो दिखाई दे रहा है, दिस जेली सब्सटेंस इज नथिंग बट द न्यूट्रिएंट मीडिया. इट परफॉर्म्स द रोल एज ए सॉइल, ठीक है, सॉइल के जैसा काम करेगा ये. इस न्यूट्रिएंट मीडियम पे जैसे हम लोग कोई एक्सप्लांट रखते हैं, इट मे बी अ सेल टिश्यू और ऑर्गन, तो जैसे ही एक्सप्लांट रखेंगे, दिस एक्सप्लांट इट स्टार्ट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस न्यूट्रिएंट मीडिया or the culture media, and that explant it is converted into this unorganized mass of cell, and this unorganized mass of cell is called as a callus. Later on, we will supply the specific hormone concentration to this callus, and this callus is responsible for the development of root system and the shoot system. ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे root system and shoot system in case of the plant tissue culture technique. So let's just continue the topic. The next aspects of the plant tissue culture, that is a callus culture. Callus can be artificially developed through the tissue culture technique. ठीक है, कैलस जो है हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलस प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कोई सेल टिश्यू या फिर ऑर्गन हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद में उसको ग्रो करवाएंगे और उसके बाद में हमें कैलस मिलेगा. तो उसके वो टेक्निक फॉलो करने के बजाय हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कैलस को आर्टिफिशियली भी डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. ड्यूरिंग कैलस कल्चरिंग 2 to 5 mm sterilized pieces of explant is transferred into the nutrient medium and inoculated at a 25 to 28 degrees centigrade in an alternate light and dark period of 12 hours. So this is the technique for the callus culture, to develop the callus artificially. During callus culturing, अगर हमें callus culturing करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 to 5 mm साइज के स्टरलाइज पीसेस लेने पड़ेंगे एक्सप्लांट के. ठीक है, एक्सप्लांट एक्सप्लांट अभी फिर से बताने की जरूरत है कि एक्सप्लांट इट में बी ए रूट स्टेम और द लीव्स, एनी पार्ट, कोई भी पार्ट की जो प्लांट का जो कोई भी पार्ट प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज होने वाला है उसे हम लोग एक्सप्लांट कहते हैं. So 2 to 5 mm sterilized means free from contamination. Sterilized piece of explant is transferred into the nutrient medium and inoculated. ठीक है, मतलब उसे रखा जाएगा 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड में in an alternate light and dark period of the 12 hours. अभी आप बोलोगे कि सर ये alternate light and dark period हम लोग कैसे क्रिएट कर सकेंगे. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर की, दैट असेप्टिक लेबोरेटरी कंडीशन शुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें एक असेप्टिक लेबोरेटरी लगती है. ठीक है, दैट लेबोरेटरी शुड बी फुल्ली इक्विप्ड विद द फैसिलिटीज टू कंट्रोल द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक द लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एटसेट्रा. ठीक है,
तो ये सभी फैक्टर्स कंट्रोल कर सकेंगे ऐसी एक लेबोरेटरी हमें सेटअप करनी पड़ती है फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर, कि जहाँ पे लाइट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पीरियड ऑफ 12 आवर्स. The callus developed in a explant are now separated and transferred into the fresh medium. जो कैलस डेवलप हुआ रहता है ऑन एक्सप्लांट आर नाउ सेपरेटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फ्रेश मीडियम. मतलब देखिए, जो कैलस डेवलप हुआ रहता है एक्सप्लांट से जो कैलस डेवलप हुआ रहता है उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है फ्रेश मीडियम में. फ्रेश मीडियम में मतलब जैसे देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने कैलस को ग्रो करवाया. कैलस को ग्रो करवाया मतलब बेसिकली क्या किया कि जो सेल्स या फिर एक्सप्लांट लिया था उस एक्सप्लांट ने उस न्यूट्रिएंट मीडियम से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया. अभी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी ग्रोथ हो गई कैलस की. कैलस बनने के बाद उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो खत्म हो गए. ठीक है, लेकिन अभी कैलस को फिर से ग्रो होना है तो वहां पे न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी. इसलिए कैलस को हमें दूसरे फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करना पड़ता है. The callus developed on a explant are now separated and transferred into the fresh medium. After attaining the growth, callus is subcultured at a regular interval of 3 to 4 weeks by dividing into the pieces. मतलब हमें उस कैलस को कल्चर करने के बाद उसे मॉनिटर करना पड़ता है. ठीक है, रेगुलरली इट शुड बी सब कल्चर मतलब नए न्यूट्रिएंट मीडियम में उसे ट्रांसफर करना होता है आफ्टर द 3 to 4 weeks. ठीक है. For the applications of callus culture, callus culture are now slow growing system on the static medium and offer the unique system to study some important aspects of the metabolism and differentiation of the plants. These are nutrition of the plants, cell and organ differentiation and morphogenesis, somaclonal variations and its exploitation, developing cell suspension cultures and a protoplast culture. हम लोग पढ़ने वाले आगे सस्पेंशन कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में. जेनेटिक मैनिपुलेशन यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स ऑफ द जीन ट्रांसफर इन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर रेगुलेशन. सो दे आर द एप्लीकेशंस ऑफ द कैलस कल्चर. ये कैलस कल्चर की एप्लीकेशंस दी हैं इन लोगों ने यहाँ पे. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस सस्पेंशन कल्चर. ठीक है, सस्पेंशन कल्चर के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे. The suspension of single cell or the cell culture, cell clumps of the few or the many cells produced in a liquid nutrient medium during the culture of cells and tissue is called as suspension culture. देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो मेथड देखी है टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर करने के लिए तो सबसे पहले हमें लगेगा एक्सप्लांट. ठीक है, एक्सप्लांट के बाद हमें लगेंगी एक असेप्टिक लेबोरेटरी कंडीशन लगेंगी. ठीक है, असेप्टिक लेबोरेटरी कंडीशन के साथ साथ हमें वहां पे न्यूट्रिएंट मीडिया लगेगा. न्यूट्रिएंट मीडिया के बाद हमें वहां पे कुछ हार्मोन्स लगेंगे. ठीक है, हार्मोन कंसंट्रेशन एंड सर्टेन फैसिलिटी टू कंट्रोल द डिफरेंट फैक्टर्स लाइक द लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा इन द लेबोरेटरी. तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कैलस कल्चर. कैलस कल्चर में क्या किया था, सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम लिया था. ठीक है, solid nutrient medium which is prepared with the help of the agar. ठीक है, agar it is a medium which helps to produce the culture medium of the nutrient medium in case of the process of plant tissue culture. तो देखिए पहले केस में हम लोगों ने क्या किया, कैलस कल्चर के केस में, इन केस ऑफ द कैलस कल्चर के केस में हम लोगों ने क्या किया था कि जो एक्सप्लांट थे उस एक्सप्लांट को सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा हुआ था. ठीक है, सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम लाइक जैसे कि मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, अगार व्हाइट कलर का. ठीक है, सो दिस इज अ सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम. ये सेमी सॉलिड या फिर जेली जैसा सब्सटेंस है, तो ये सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो ये कैलस कल्चर हो गया. लेकिन अगर हम लोग एक्सप्लांट या फिर हम लोग इस कैलस को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोगों को कोनिकल फ्लास्क दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर ये लिक्विड दिखाई दे रहा है आप लोगों को. ठीक है, तो ये सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया और ये लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया. ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सप्लांट को या फिर हम लोग कैलस को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाते हैं, ठीक है, देन दैट विल बी द कंडीशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर. ठीक है, वो कंडीशन बन जाएंगी फिर सस्पेंशन कल्चर की. ठीक है, अगर हम लोग कैलस को सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाते हैं देन इट इज द केस ऑफ कैलस कल्चर.
और अगर हम लोग एक्सप्लांट को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करवाते हैं, ठीक है, दैट मेनी सेल्स प्रोड्यूस इन अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम ड्यूरिंग द कल्चर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, इट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन कल्चर। इसे हम लोग सस्पेंशन कल्चर कहेंगे। Liquid culture must be constantly agitated to facilitate the aeration and dissociation of cell clumps into the smaller pieces. लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करने के पीछे क्या रीजन है? लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम के केस में जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूअसली एजिटेट होती रहती है, मतलब वो मूव होती रहती है ताकि उसको प्रॉपर अमाउंट में एरेशन मिल पाए। डिसोसिएशन ऑफ द सेल क्लम्प्स, मतलब वो सेल एक जगह पे जमा ना हो पाए। सस्पेंशन कल्चर ग्रोज फास्टर देन द कैलस कल्चर। सस्पेंशन कल्चर में ज्यादा ग्रोथ होती है एज कम्पेयर टू द कैलस कल्चर। It has been observed that if relatively small members of the cells is transferred, they may fail to divide, whereas a large quantity of tissue transferred from same culture may proliferate rapidly on the same medium. This observation leads to the concept of critical initial cell density. This can be defined as the smallest inoculums per volume of medium from which a new culture can be reproducibly grown. The critical initial cell density can be determined by the certain conditions of the culture. These are the physiological status and the characteristics of the culture, the length and the time and the condition under which the culture was previously maintained, and the chemical and nutrient composition of the fresh medium. Suspension culture are broadly grouped into three subcategories. मतलब सस्पेंशन कल्चर अगर हमें करना है तो इसकी भी अलग अलग मेथड्स होती है। तो इसकी तीन मेन मेथड्स यहाँ पे दी है: बैच कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर एंड इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बैच कल्चर के बारे में। The same medium and all the cells produced are retained in the culture flask or the vessels. ठीक है, बैच कल्चर के केस में मीडियम सेम रहेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम सेम रहेगा, and all the cells produced are retained in the culture flask or the vessels. ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम will be same. Continuous culture के केस में the cell proliferation is maintained in a steady state by regularly replacing the portion of used or the spent medium by the fresh medium. Continuous culture के केस में क्या होगा कि मीडियम चेंज किया जाएगा, न्यूट्रिएंट मीडियम को रेगुलरली चेंज किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा किसी न्यूट्रिएंट मीडियम से, तो वैसे ही वहां पे फ्रेश मीडियम यूज किया जाएगा, लेकिन जो मटेरियल रहेगा वो सेम ही रहेगा। The input and outputs are precisely controlled and the cells are grown under the defined condition of the nutrients. Immobilized cell culture, the plant cells and a group may be encapsulated in a suitable material, for example, agarose and calcium alginate gels. Immobilization of the cells changes their cellular physiology in comparison to the suspension culture.